हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आज वीडियो रे हमें देखिबा सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 रो हमर आस्तला फेडरल स्कीम ऑप्शन बी टा हिजबो करेक्ट। The next question is the idea of fundamental rights in the Indian Constitution was inspired primarily by the Constitution of which country? The fundamental rights amaraste koto USA option A ta is correct. The next is amaro directive principle of state policy काटो borrow करा है तो एटा amaro है Irish Constitution जोटा कि amaro होचे Ireland option B ta is correct. The next question is amaro पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा हमरो काटारो इंस्पायर तो एटा हमरो होचे कोडो इंग्लैंड यूके यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन बी टा हिजो करेक्ट। द नेक्स्ट अछि द आइडिया ऑफ कनकरेंट लिस्ट। द कनकरेंट लिस्ट हमरो इन्फ्लुएंस होइचे हमरो ऑस्ट्रेलिया पाकरो ऑप्शन ए टा हिजो करेक्ट। द स्ट्रांग सेंटर विथ फेडरल स्ट्रक्चर हमरो एटा आछे कनाडा पाकरो ऑप्शन ए टा हिजो करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा तो एटा हमरा आस्तिला बोरो करा हेतला साउथ अफ्रीका पाकरो ऑप्शन एटा हिजो करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो एटा हमरा आंसर हिजो फ्रांस ऑप्शन एटा हिजो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस पाखर हमर कोडा पार्लियामेंटारी सिस्टम टा हमर होतिला यूके ऊपर देखले रूल ऑफ लॉ भी यूके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा हमर जापान तापर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पाखर हमर आस्तला जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन बी टा हिजो करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमर एटा आस्तला जापान ऑप्शन ए टा हमर हिजो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो हमरो आयरलैंड पाखर आस्तला कोन डीपीएसपी तो एटा हमरो इनकरेक्ट अछि। तापरे यूएसए पाखर हमरो आस्तला जुडिशियल रिव्यू आ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमरो आस्तला आयरलैंड पाखर तो पार्लियामेंटारी सिस्टम हमरो आस्तला यूके माने हमरो कोडा यूनाइटेड किंगडम पाखर तो एटा हमरो आंसर ऑप्शन बी टा हिजो करेक्ट। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान पाखर हमरो बोरो करा हेतला। नेक्स्ट अछि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कोड हमर इन्फ्लुएंस हेतला तो एटा हम आंसर जो ऑस्ट्रेलिया पाखर इन्फ्लुएंस हेतला हमरो एटा ऑप्शन एटा हिजो करेक्ट। द नेक्स्ट अछि द आइडिया ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमर आस्तला जर्मनी पाखर ऑप्शन एटा हिजो करेक्ट। The next question is which of the following is not a feature borrowed from the British Constitution। तो पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट हमरो एटा ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटिश तापरे सिंगल सिटीजनशिप एटा ब्रिटिश बाकी जुडिशियल रिव्यू टा हमरो होची यूएसए तेनो ऑप्शन डी टा हिजो हमरो करेक्ट। तो नेक्स्ट हमरो होची नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा तो एटा हमरो आंसर हिजो आयरलैंड पाखरो हमरो ए प्रोविजन टा आस्तिला ऑप्शन एटा हिजो करेक्ट। नेक्स्ट अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इनकरेक्ट हमर कोडा अछि ऑस्ट्रेलिया कनकरेंट लिस्ट एटा हमर ठीक अछि कनाडा फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर एटा भी ठीक अछि आयरलैंड डीपीएसपी एटा भी ठीक अछि साउथ अफ्रीका फंडामेंटल राइट्स एटा भूल अछि कारण फंडामेंटल राइट्स हमर आस्तला यूएसए पाक तो ऑप्शन डी टा इज करेक्ट। The next question is the Indian Constitution was influenced by the Government of India Act 1935 in all of the following areas except। तो हमरो कोटा हमरो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो हमरो इन्फ्लुएंस हे नथिला से सेटा पचार्स तो पब्लिक सर्विस कमिशन 1935 फेडरल स्कीम भी 1935 ऑफिस ऑफ गवर्नर एटा भी 1935 फंडामेंटल राइट्स एटा हमरे बे कहले कि हमरो एटा आस्तला यूएसए पाखरो ऑप्शन डी टा हमर जो करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स तो एठी चारटा पेयर देछि ता भितर पचार जे हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो हमर रूल ऑफ लॉ एटा हमर आस्तला यूके जोटा कि हमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पाखर आस्तला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा भी यूएसए पाखर आस्तला एटा भी ठीक अछि तापर डीपीएसपी आयरलैंड एटा भी ठीक अछि जापान प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एटा भी मध्य करेक्ट अछि।
तो आमर ये 4टा ऑप्शन करेक्ट अच्छी तेणु आमर आंसर हो ऑल 4 ऑप्शन डी हो करेक्ट। The next question is which source contribute the idea of residuary powers vested in the center to the Indian Constitution? तो ये आमर आसला कनाडा ऑप्शन एटा हो आमर करेक्ट। The next question is which of the following best describes the nature of Indian Constitution borrowing from foreign constitutions? तो ये आमर अच्छे इट कॉपीड वन कॉन्स्टिट्यूशन एंटायरली ये आमर भूल अच्छे कारण आमर वेरियस कंट्री पाखर आम आनी तापर नेक्स्ट अच्छी इट अडॉप्टेड प्रोविजन सिलेक्टिवली एंड अडॉप्टेड देम टू इंडियन कंडीशंस तो ये आमर करेक्ट अच्छे। तो ये आमर 20टा क्वेश्चन सरीगला जदि आपको वीडियो भल लगे तो निहाती लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।